Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part-3 English Literature class. Today we are going to discuss T.S. Eliot's poem Preludes, Part-3. As I told you that Preludes is a chain of 4 short poems composed by T.S. Eliot, which was published in his first collection Prologue and Other Observations in 1917. The first poem in Preludes is a winter evening scene at 6 o'clock. The smell of tea cooking in passageways tells us it is the dinner time. A brilliant image expresses the evening as the stub end of the smoky days. A wind is bringing a hint of rain and blows withered leaves from here to there. Newspapers are blown away across the street. The detail could well be taken from an American city. A cab horse sweats and stamps its feet at the corner of the street. The lights are there in the streets. So the lamps are lightened in the street. यदि हम फर्स्ट प्रील्यूड की बात करें जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें अमेरिकन सिटी का रेफरेंस राइटर ने दिया है. एक विंटर इवनिंग की बात करता है. 6 o'clock हो चुके हैं विंटर इवनिंग के, और राइटर बताता है कि क्योंकि ये डिनर टाइम है तो जिस भी रास्ते से वो गुजरता है वहाँ स्टीक एक प्रकार का मांस होता है जिसको पकाने की स्मेल वहाँ आ रही है. और उसके साथ ही जो फॉगी डेज हैं विंटर इवनिंग के, उनको वो स्मोकी डेज, स्टब एंड ऑफ द स्मोकी डेज के रेफरेंस में लाता है. और क्योंकि ये विंडी डेज हैं तो विंड्स ब्लो कर रही हैं, हवा चल रही है और हवा के साथ बारिश भी आ रही है, जिससे कि जो पुरानी पत्तियां हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और न्यूज़पेपर्स भी इधर उधर बिखरे हैं. पास में ही एक कैब हॉर्स है जो कि जिसके मुंह से धुआं निकल रहा है सर्दी के कारण, और वो उत्तेजना के साथ इधर उधर अपने पाँव पटक रहा है. और वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो पूरी तरह से चकाचौंध से भरपूर हो चुकी हैं. लाइट्स वहाँ पर जल चुकी हैं. अब यदि सेकंड प्रील्यूड की हम बात करें तो सेकंड प्रील्यूड में मॉर्निंग सीन की राइटर बात करता है. एलियट चेंजेस द फॉर्म ऑफ हिज वर्स टू समथिंग नियरर रेगुलर स्टैंजिक पैटर्न. क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा की, फर्स्ट प्रील्यूड की हम बात करें तो वहाँ कोई लाइन हमें 4 वर्ड्स की दिखती है तो कोई 3 वर्ड्स की भी दिखती है. लेकिन यदि सेकंड स्टैंजा की बात करें, सेकंड प्रील्यूड की बात करें, तो वो बहुत ही रेगुलर स्टैंजा का पैटर्न राइटर ने फॉलो किया है. But the sordidness is continued in the morning scene. Though people are rising from the bed and marching to the workplace, stale smells of beer surround the workers as they stamp down the sawdust-trampled street with their muddy feet. The atmosphere is one of hangover after a night of wickedness. Many people are being ready to act the daily pretense of life. The monotonous life of work, school, old faces and the like is reflected by the writer. Life goes on, but it is meaningless ritual. अब सेकंड प्रील्यूड की बात करें तो सेकंड प्रील्यूड में सॉर्डिडनेस जो है, हमारे जीवन की जो मोनोटोनस एस्पेक्ट है, सॉर्डिडनेस है, एक तरह से कह सकते हैं कि बोरियत भरी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बात करता है राइटर मॉर्निंग सीन में भी. हालांकि सुबह हो चुकी है, सिर्फ सुबह के बारे में हम कहते हैं कि वो रिफ्रेशिंग होती है, ताजगी से भरी होती है. लेकिन यदि अमेरिकन सिटी की बात करें तो वहाँ की ज़िंदगी चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, ताजगी भरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है राइटर. क्योंकि लोग अपने बेड से उठ तो चुके हैं लेकिन वो कहाँ, बहुत जल्दी में हैं, वो अभी भी अनकॉन्शियस फील कर रहे हैं. इसीलिए वो अपनी निद्रा को उड़ाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कॉफ़ी स्टैंड्स पर जा रहे हैं. और उनके आसपास अभी भी बियर की बोतल जो उन्होंने रात में पी होंगी वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं. और सारी गलियां जिनसे होकर के वो गुजर रहे हैं वो कैसी हैं, सॉडस्ट ट्रैम्पल्ड स्ट्रीट हैं. उनके फीट कैसे हैं, वो भी अनक्लीन हैं, मडी हैं, है ना. और वो मैकेनिकल रूटीन को फॉलो कर रहे हैं. उनकी लाइफ जो है वो मोनोटोनस हो चुकी है, मीनिंगलेस है उनके लिए सब कुछ. सो दैट इज देयर. सो लेट अस नाउ कम टू द थर्ड प्रील्यूड. You tossed a blanket from the bed. You lay upon your back and waited. You dozed and watched the night, revealing the 1,000 sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the ceiling. And when all the world came back, and the light crept up between the shutters, and you heard the sparrows in the gutters, you had such a vision of the street as the street hardly understands. Sitting along the bed's edge,
where you curled the papers from your hair, or clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. अब यहाँ पे राइटर ने फर्स्ट और सेकंड प्रिल्यूड में अनक्लीन एटमॉस्फेयर की बात की है ना, लेकिन यहाँ एक अनक्लीन लेडी की बात कर रहा है, द लेडी हु इज डर्टी, एक डर्टी लेडी की बात कर रहा है. यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड. यू हियर रेफर्स टू अ वुमन. यू टॉस्ड, टॉस का मतलब होता है किसी चीज को उछालना, लेकिन यहाँ टॉस का मतलब है थ्रू अप सडनली एंड वायलेंटली, अचानक उठाकर इधर उधर करना. You lay upon your back. You are lying in the bed at your backside and waited. You are waiting for someone to come. You dozed and watched the night revealing. Dozed, slept lightly. हल्की सी निद्रा में हो. You dozed and watched the night revealing the thousand sordid images. You are not sleeping a sound sleep. You are seeing certain images from the last night which are sordid like everything else mentioned in the poem. There is nothing in her soul to distinguish her from the environment. The environment is unclean, so also she is unclean. Her soul is unclean. She is having all the ideas which are dirty, illegal, of which your soul was constituted. Your mind is full of dirty ideas. They flickered against the ceiling. The images that are there in your room, they are dirty images, and they are fluttering just like a bird against the ceiling. The woman's filthy experiences of the night flashed for a moment like the lantern slides on the ceiling. And when all the world came back, when it was daylight, when it is the light of the morning, when all people are waking up, and when all the world came back and the light crept up between the shutters, and the light of the sun, it is creeping in the room through the shutters, a closed cover for a window or aperture that is called shutter. And you heard the sparrows in the gutters. Sparrows in the gutters, sparrows growling in the gutters. पक्षी गटर में शोर मचा रहे हैं. You are listening to that. You had such a vision of the street as the street hardly understands. The woman's vision is an insight into the sordid bits and pieces which make up the street. The woman begins to think of the trampled street outside and conjures up an un-street-like vision of it. The vision is described in the last prelude. Sitting along the bed's edge, where you curled the papers from your hair. You are sitting on the corner of your bed, where you curl your hairs with the help of some papers. Or clasp the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. Not only your mind is unclean, so also your body. Yellow soles of feet, the phrase probably suggests weariness and toil she has done. Soiled, dirty. Your feet is also dirty, and you are clasping your feet in your hands, which are also dirty. So here the writer tries to project the image of a prostitute. These lines of the third prelude present picture of a woman. You stands here for the figure of a dirty woman. Perhaps she went to bed without taking a bath at night. That's why she is unclean. Her hands, feet and body was unclean. She awakes. She does not get up or sit down on the bed at once. She lies still on her back. She appears to be having a mild doze. She is thinking of her sordid experiences of the night which compose her inner life. They flashed for a moment like lantern slides on the ceiling and vanished as the light crept into the room between the shutters.
and the ear was regaled by the sound of the sparrows brawling in the gutters. The woman sits up on the edge of her bed. She curls the papers from her hair and grasps the yellow sole of her feet with the palms of both her dirty hands. Then she begins to think of the trampled street outside and conjures up an un-street-like vision of it. She imagines that the road is like a woman who is trampled by innumerable men. The dirty street is like the unclean woman stretched on her back and passively enduring the pressures of man mounted on her. So, if we talk about this third prelude, here the picture that is taken by the writer is that of a prostitute. She is not unclean, her thoughts are, she is not clean, and so also her thoughts. And she is regaining all those ideas when she is trying to lie on her bed. बट स्टिल शी इज नॉट डिवॉइड ऑफ दीज आइडियाज. यहाँ पर जो कवि ने चित्र प्रस्तुत किया है वो एक प्रोस्टिट्यूट का किया है, क्योंकि उसकी थॉट्स जो हैं वो क्लीन नहीं हैं. शी इज नॉट पायस, शी इज नॉट प्योर. इसीलिए राइटर ने उसको एक मीन्स गंदे वातावरण के साथ उसको एसोसिएट किया है. जिस तरह से सॉर्डेड इमेजेस राइटर ने स्ट्रीट की रिप्रेजेंट की हैं कि जो बाहर गलियां हैं, सड़कें हैं, उन पर गंदगी फैली हुई है, उसी तरह से ये जो स्त्री है वो भी पूरी तरह से गंदगी में कह सकते हैं घिरी हुई है, गंदगी से घिरी हुई है. उसकी बॉडी अनक्लीन है, उसका माइंड अनक्लीन है, उसकी सोल अनक्लीन है. राइट? तो गंदी स्त्री के समान है जो पीठ के बल लेटी हुई है और उसके ऊपर से जा रहे लोगों को बोझ या दबाव को चुपचाप सहन कर रही है. So that is all about this third prelude. The fourth part of this poem we will continue tomorrow. Thank you all.